प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा न्यूज छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत की खबरें हैं और बहुत सारे बाहर कंट्रियों की भी खबरें हैं। जिस तरह से हमारे भारत में एक मीटिंग के बाद में, पार्लियामेंट के एक मीटिंग के बाद में हमारे भारत के पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी साहब और प्रियंका जी ने और बहुत सारे जो लीडरों ने बैठकर एक मीटिंग करने का मंजर है। और जो जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से बहुत सारे खरियों में हो, बहुत सारे जगह पर पानी जो सप्लाई करते रहते हैं, ऐसे पानी के पीने के पानी के जो बहुत सारे नाम रखकर रहते हैं, जिस तरह से बहुत सारे जो अंग्रेजी नाम रखकर रहते हैं वो नाम को हटा करके और हमारे भारत वाले रहते हैं उनका नाम उनका नाम रखना करके बोल रहे हैं। उनका नाम फिक्स कर करके वो कौन सा नाम है मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों। और जो जिस तरह से जो लारी जो है वो लारी के अंदर बहुत सारा जो जो लगेज लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है मालूम नहीं, लेकिन रोड के बाजू में एक लारी खड़ा कर रहे हैं। वो लारी को जब्त कर कर ही जिस तरह से जो लारी के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो डुप्लीकेट हैं। और मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, जिस तरह से जो बाहर कंट्रियों में जिस तरह से क्या क्या चल रहा है, जो हमारे जो रशिया के पुतिन साहब का एक मीटिंग का मंजर है, और जिस तरह से जो बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके बारे में, जिस तरह से मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों जो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, जो सीरिया में क्या चल रहा है उसके बारे में, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अब जो जिस तरह से चीन हो भारत से और चीन से भारत से दोनों तरफ से किस तरह से बहुत सारे अब जो डीलिंग होने वाले हैं, बिजनेस के हो व्यापार के हो, और बहुत सारे किस तरह से अब जो बहुत सारे बातचीत मीटिंग होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। और जिस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे जगह पर जो आंध्र हमारे भारत में तमिलनाडु में हो और बहुत सारे जगह पर हो, किस तरह से जो वोटर लिस्ट रहते हैं वो किस तरह से चेकिंगा हो रहे हैं, कितने ही वोटर कहां पर कितने ज्यादा होकर ही, क्या कितने कम होकर ही, किसके नाम है किसके नाम नहीं करके, जिस तरह से बहुत सारे जगह पर अब जो इलेक्शन के वक्त पर करीब में किस तरह से वोटर की चेकिंग चल रहे हैं, कहां पर कितने डिलेट होकर ही करके मेरे प्यारे बुजुर्गों। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहुत सारे जो पानी के जो आंध्र प्रदेश में जिस तरह से जो पानी सप्लाई करते रहते हैं, पानी के जो रहते हैं जो खरिया को जो डालने के जो पीने के पानियाँ और बहुत सारे क्या क्या जो पानी जो सप्लाई करके जो नामा डालकर रहते हैं, JJM वाटर ग्रिड करके मेरे प्यारे बुजुर्गों, ऐसे नामों को जो बदलाने जा रहे हैं। जो जिस तरह से जो पोट्टी श्री रामुलु को जो भारत के लिए बहुत सारे ऐसे उन्होंने साथ देकर ही जिस तरह से जान तक उन्होंने वक्त पर कर दिए ही, इस तरह से ऐसे आदमियों के नामा जिस तरह से बदला रहे हैं। अब जो नाम रख रहे हैं वो पोट्टी श्री रामुलु को उनका नाम रखने जा रहे हैं, जो JJM वाटर ग्रिड का नाम बदला करके। जिस तरह से मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहुत सारे जो लारियां को जिस तरह से जो उसकी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लारियों के जो नाम बदला करके दूसरे डॉक्यूमेंट से जिस तरह से गाड़ियां चला रहे हैं करके, वो किस तरह से एक लारी को पकड़ करके जब्त कर ले हैं मेरे प्यारे बुजुर्गों। उसके अंदर क्या लगेज था, क्या सप्लाई होता था, ऐसे लारियां को भी किस तरह से चेकिंग करके जो उसका डॉक्यूमेंट से दूसरा था उसके लिए ऐसे लारियां को भी पकड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, जो कौन से भी हो व्हीकल्स रहते हैं, जो व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स जो परफेक्ट नहीं रहते, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना करके जो रख करके जाते रहते हैं, तो क्या होता है वो डॉक्यूमेंट भी जाते हैं, वो व्हीकल्स भी कब्जा हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट वाले चेक करके जिस तरह से वो ऐसे व्हीकल्स को भी कब्जा कर लेते हैं मेरे प्यारे बुजुर्गों। इसलिए जो भी व्हीकल्स रहते हैं परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स, परफेक्ट उसका जो भी रहता है जो परफेक्ट है, तो गाड़ी भी जो व्हीकल भी सेफ रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी सेफ रहते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बुजुर्गों, ये था जो रशिया के जो पुतिन साहब हैं उनका मीटिंग का मंजर मेरे प्यारे बुजुर्गों। ये मीटिंग का मंजर आप देख सकते हैं। Because we are generally against the deployment of any weapons in space. I see. Human, could you please be so kind as to hand me the microphone?
Hello everyone, my name is Kristina Smirnova, a reporter from the Tumen Time TV channel here in Tumen. I have a question for you regarding the unusual celestial object known as 3I Atlas, which is currently approaching our planet. And if forecasts are to be believed, then precisely today, December 19th, whether it's an engine comet, it will approach Earth. My next question is, what are the intelligence services and Roscosmos reporting to you? Are there truly indications of an artificial origin, however ridiculous it may currently sound, but there are indeed a great many theories and speculations. And we, as Tumen, to welcome any kind of guest. However, if these guests happen to be from outer space, then we would certainly like to be properly prepared. And secondly, is the date of our meeting here today somehow connected with this particular forecast? Because this is the very first time we've ever summarized our results on a Friday. Thank you. Vladimir Vladimirovich, you're actually being asked here to wink your left eye if you know that extraterrestrials exist. But that's classified. That's what they write. Oh, I'd love to hear. Wink at me if you have. Christina, is that your name? So I'll tell you, but this must remain strictly between us. This is classified information, our secret weapon, but we will only use it as a last resort against the deployment of any weapons in space. But seriously, it's a comet. Our scientists, they know exactly what's happening, and what's more, this comet is from another galaxy. Therefore, its behavior is not like that of comets, those originating from our own galaxy. It possesses a distinct outer shell, and as it draws nearer to the sun, somewhat different processes unfold upon its surface, including aspects of its appearance are quite distinct. But she, on the other hand, it's quite a considerable size. I would personally estimate it's roughly somewhere between 2 and 6 kilometers in length. At a distance of 400,000 kilometers from us, and the object that you are talking about is located at a distance of hundreds of millions of kilometers, and I do not think that it represents any kind of threat to us. Let's send it off to Jupiter. And at the beginning of the next year, the comet will depart from our solar system. Thank you. Let's continue. Start in New York City collapsed in less than 24 hours. On Thursday, a high-profile appointee of Mayor-elect Zoran Mamdani resigned after newly resurfaced social media posts revealed a trail of anti-Semitic language and anti-police rhetoric, sparking outrage and immediate scrutiny. Catherine Almonte da Costa had been announced just a day earlier as New York City's next director of appointments, a powerful role tasked with help. से जो आप जो देख रहे हैं ये सीरिया के अंदर किस तरह से क्या होकर है, कैसा होकर है, ये सीरिया का वार का मंजर था मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, ये आप देख सकते हैं। Shocking. U.S. forces attacked an Arab nation, suffer casualties. Major attack just a month after historic Trump al-Shiraz summit. American troops attacked in once ISIS. Instability and security challenges. It is the first major reported attack since Islamist-led forces overthrew the Assad regime last year. Despite years of military defeat, Al-Tanf base near the Iraqi border, the United States continues to maintain troops in Syria. Officials described the attacker as a member of Syria's security forces who was suspected of sympathizing with Al-Tanf base near the Iraqi border. The United States continues to maintain troops in Syria.
किस तरह से मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, ये बांग्लादेश का मंजर है। किस तरह से वहाँ के लोगों ने किस तरह से क्या क्या हरकम कर रहे हैं, किस तरह से जिद्दी करके, किस तरह से ये गेटा हो और बहुत सारे लोग किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, ये नज़र आप देख सकते हैं। What is unfolding in Bangladesh is no longer just an internal political crisis. For India, it has now become the biggest strategic worry since down the situation. It is not at all welcome that our Assistant High Commissioner, which is like the Shashi Tharoor. and now Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's son reflects that concern. Dhaka recently saw massive anti-India protests. Slogans were raised. Marches were planned towards the Indian High Commission. The visa application center in Dhaka shut early, citing security concerns. A clear sign that the ground situation is volatile. In the Bada area. The demonstrations were led by the July Oikia platform, born out of the 2024 uprising. The protesters demanded Sheikh Hasina's extradition. They accused India of backing forces inside Bangladesh. As the इस तरह से ये अमेरिका का भी एक मंजर है मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, अमेरिका वालों का भी एक मंजर है, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। Kennedy, the so-called Kennedy Center board wants to rename the Kennedy Center after Donald Trump. Are you kidding me? Like, how does that help deal with the affordability crisis in this country? These people are pathetic. immediately triggered backlash. Jeffries, who sits on the board as an ex officio member because of his role in Congress, said the board has no authority to rename the center without legislative approval. He told reporters the decision would be challenged and made clear to the public. The agents claimed they were fired during the second Trump administration for actions taken in 2020 to prevent a riot following George Floyd's death. According to the lawsuit, the agents were unlawful for kneeling in the streets of Washington, D.C. amid rising tensions. The lawsuit alleges that FBI Director Kash Patel, Attorney General Pam Bondi, and other officials fired the agents because they were perceived as not affiliated with On June 4th, 2020, just over a week after Floyd's death, the agents were patrolling the district when they were confronted by a mob. The lawsuit states the crowd included both hostile individuals and families with young children. The special trained or equipped for crowd control, the lawsuit states. Islamic State made the remarks in its first public response, publishing an article on its Telegram channel. U.S. President Donald Trump condemned the attack as terrible and vowed retaliation. Syria's Interior Ministry says 5 suspects have now been arrested in connection. Islamic State stopped short of formally claiming responsibility, but used religious rhetoric to portray the assault as a decisive moment meant to rally its supporters and dispel doubts about. Islamic State called it a blow to American and Syrian forces. Killings as a symbolic strike has broken its silence after U.S. personnel were killed in an ambush targeting American and Syrian forces. Calling the attack identified as Jane Doe 5, says she was removed from her role as Deputy Assistant Director at FBI headquarters because she kneeled on June 4th, 2020. The lawsuit argues that Patel's actions were motivated by partisan animus, citing his book Government Gangsters, in which he suggested some government employees should be removed for not supporting the president's agenda. This lawsuit is the latest out in Palmyra in coordination with international coalition forces. A security source says U.S. helicopters and Syrian factions opposing the group.
The attack happened on Saturday when a convoy of American and Syrian forces was targeted in Palmyra. The U.S. military says two start in New York City collapsed in less than 24 hours. On Thursday, a high-profile appointee of Mayor-elect Zoran Mamdani resigned after newly resurfaced social media posts revealed a trail of anti-Semitic language and anti-police rhetoric, sparking outrage and immediate scrutiny. Catherine Almonte da Costa had been announced just a day earlier as New York City's next director of appointments, a powerful role tasked with helping. A political storm has erupted in Washington after a stunning decision involving one of America's most iconic cultural institutions. House Minority Leader Hakeem Jeffries has blasted the move to add President Donald Trump's name. इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारी खबरें देखे कि चांद बादशाह छोटा न्यूज छोटा वीडियो चैनल वीडियो के बाजू में सब्सक्राइब आएगा, उसको प्रेस करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों। आज की खबरों में इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।